Before we start with 64th verse, I want to say one thing, that I hope you all remember how we had started this book. The very first shlok was that what the seeker should be. What is the kind of seeker for whom this text has been written? And now it is the second last session of this book. And here, what Shankaracharya is telling us is that what should we be as the end result of this Shastra after having learned all the details and nature of the self and how to separate it from the BMI. So what should be, how our heart should be throbbing at this particular moment? Now we will read the 64th verse. Drishyate shruyate Drishyate shruyate yadyat brahmano anyanna tad bhavet tattva jnanacha tad brahma satchidanandam advayam. Yes. So now we will go through the literal translation of this. All that is perceived or heard is Brahma and nothing else. मतलब जो कुछ हम देखते हैं, दृश्यते, श्रूयते, यद्यत ब्रह्मणो, हर एक चीज केवल ब्रह्म है. Gaining the knowledge of the reality, one sees this universe as the all-pervading non-dual Brahman, which is existence, consciousness, bliss, absolute. तो आज सवेरे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं ध्यान में बैठी, तो somehow the presence or the reality, it hit me so close, जैसे कि मेरे को पूरी तरह से आच्छादित कर दिया उसने. और जैसे मुझे आच्छादित करा, वैसे ही ये रियलिटी पूरे क्रिएशन को ऐसे ही आच्छादित कर रही है, जो कि ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक का पहला लाइन है. उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इस पूरे संसार को, इस पूरी क्रिएशन को उससे आच्छादित देखो, covered with. So actually I got the feeling that I was completely covered with the self, because ये person तो exist ही नहीं करता ना. So the whole thing was जैसे कि covered with that self, which I am. और इसकी जो कमेंट्री, जो ईशावास्य उपनिषद की इस पहली लाइन की कमेंट्री शंकराचार्य ने दी है, उसमें ये कहा कि रियली स्पीकिंग उसको कवर्ड मत देखो, पर उसको, मतलब उसको अनकवर करो. वो जो सेल्फ है उसको अनकवर करो या डिस्कवर करो. You see how from covered it has come to uncovered to discover. To discover that self when all else is silent. And that is the experience I will be taking you to at the end of this class. Okay. Now, if currently we are not feeling like this, what does it mean? Why is it that it is not happening so closely with us, with each one of us who has been attending this class? So I will tell you your diagnosis. We are all very high on feelings. Am I right? Have I diagnosed you correctly? Are we very high on feelings? Yes. So what is happening?
we are very high on feelings. Oh, this feels so good. This is so sweet. This is so soft. This gives rise to tender feelings in my heart. This has touched me deeply. This has jerked tears of sorrow in my eyes. So what are we? We are hung up on feelings. We are always looking for more and more feelings. And what we are looking is what we will find. Please write down this line. What we are looking is what we will find. Instead of looking for the self with our closed eyes, we are looking for more and more feelings in this world. And that is why that is what we find. Let us compare this to what we have experienced in our Vedantic meditations. What did we find over there? First of all, let us give that presence a name. What name shall we give? Can we call it isness? Shall we call it isness? Can most of you please open your videos so that I'm not talking to blank wall of people, but I have some responsive faces to look at. So shall we call it isness? That which is, can we say? Now come to that experience of our Vedantic meditation. Could we have said that this tastes very good? Did it have a taste? No. There No. was no taste. Can Never. I say, oh, it is so beautifully round? Did you feel No. that it was round? Or No. it was so No. long? No. No. Because it is none of those things. It is not being reported through the eyes. जो आपने उस समय reporting करी थी, for the first time you were able to see something without these eyes. You looked at it from where? You looked at it from the heart. And when you looked at it from the heart, how convincing was that experience? It was not an experience of the ordinary kind. It was done without any of your sense organs coming into play. You had sensed it without falling back on your sense organs. And then you had to use such words. Oh, I think it was like this, or I believe it was like this. I have a feeling it was like this. It was none of these things. It was a very convincing experience of a different kind. Now I want to take you to a hypothetical situation. Suppose by the grace of some sage, you have discovered your past life family. Suppose that sage takes you to the place in which you existed in your previous life. And you meet those people, you recognize them, they also recognize them. You shed tears, you hug them, and you shed tears on their shoulders. And you're so touched. And now these people, which family you belong to, they have become millionaires. And they are saying कि तुम कभी भी आ सकते हो, तुम हमारे पास आ जाया करो, हमको तुम्हारी याद आती है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर. अब ये वाला एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए कितना मूविंग होगा. तुम इमेजिन करो कि तुम सचमुच पास लाइफ में चले गए हो, उन लोग से मिल लिए हो, वो लोग तुमको बहुत प्यार से बुला रहे हैं, लेकिन अब तुमको वापस जाना है. लेकिन क्या तुम भूल सकोगे कि तुम कहाँ गए थे? क्या तुमको उसको गांव का नाम भूल जाएगा? नहीं. तुम्हारा जो गुरु तुमको साथ में लेकर के गया है,
तुम एकदम अच्छी तरह से याद कर लोगे कि हाँ मैं यहाँ पर था, हाँ हाँ मुझे याद आ गया, यही तो था मेरा गांव। क्या तुम बार बार उस एक्सपीरियंस में जाना नहीं चाहोगे? हाँ, जानना तो चाहिए। क्यों तुम अब बोलते हो कि अरे वो तो एक्सपीरियंस हुआ था वेदांतिक मेडिटेशन में, लेकिन अब तो खो गया? क्यों नहीं तुम अपने आप को उसमें बार बार डुबोते हो? क्यों नहीं तुम उसमें मैरिनेट करते हो? ये मुझे आप लोगों से पूछना है, ठीक है? So well said, superb. तो दो बातें अभी तक मैंने कही कि एक तो हम लोग वी आर वेरी हाई ऑन फीलिंग्स, इसलिए हम लोग चूक जाते हैं, हमको वो एक्सपीरियंस नहीं होता। और दूसरी बात है कि हम एक भ्रम में हैं, अरे वो तो छूट गया मेरा। अब जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ या आप लोग को देख रही हूँ, क्या मेरी सेल्फ मुझसे छूट गई है? नहीं, आप लोगों की सेल्फ आपसे छोटी है क्या? वो तो है ही है। सब कुछ जो हम कर रहे हैं या वो बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, वो सब केवल ब्रह्म है, ठीक है? अब हम लोग वापस इस श्लोक पर आ जाते हैं। That Brahman is non-dual. अच्छा, now see, this ज्ञान is very important. If we had not got this ज्ञान, we would not have been able to recognize that self, that state, that presence. You understand? Would we have come close to our reality in our Vedantic meditations if we did not have this knowledge? Now, all the other paths that have been outlined to us by our gurus, by our dharma, they have all been supportive to finally give us that experience, and they have been pointing at that experience. And therefore, all our education is incomplete if it does not lead us to self-realization. अब देखिए, हम लोग लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तरह की सफलताओं के पीछे भागते हैं, लेकिन उनमें से एक भी सफलता ऐसी नहीं होगी जो हमको इसके नजदीक पहुंचाए। लेकिन ये नहीं है कि सारा जीवन हमारा व्यर्थ है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं रामायण में? वो कहते हैं कि जो धर्म परायण है उन्हें वैराग्य हो जाएगा, राग द्वेष कम हो जाएगा, जो कर्तव्य कर्म मन लगा करके कर रहे होंगे वे तत्व ज्ञान के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जब हम एक राइचियस लाइफ लीड करते हैं तो जिंदगी के थपेड़े और हमको इस तरफ धकेलते जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो क्राउडेड नहीं है। हम अपने सीधे रास्ते चल रहे हैं, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, धर्म परायण वे में चल रहे हैं, तो हमने अपनी लाइफ को उलझाया नहीं है। लेकिन ये इतने फंदे फेंकते हैं ना ये सारी इंद्रियां कि जब हम अपनी लाइफ को उलझा लेते हैं तब हम उसमें फंस जाते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट। आज मैं किसी का सुन रही थी तो मैं एक लाइन मेरे जहन में टिक गई कि वो बुद्ध भगवान की तारीफ कर रहे थे कि he was one person without a single cobweb in his brain, not a single cobweb. और हम लोगों ने अपनी लाइफ को कैसा कर रखा है? उलझा 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 करके ऐसा कर रखा है। अब हम देखते हैं कि देखिए, अगर हम वर्ल्डली लाइफ भी लीड कर रहे हैं और हम प्रवृत्त हो रहे हैं, देखिए दो शब्द हमारे शास्त्रों में आते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो प्रवृत्त हम होते हैं जिससे कि हम निवृत्त हो जाएं। सपोज कि मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है और फिर मैं गुस्सा अपना निकाल देती हूँ तो मुझे बड़ी ठंडक महसूस होती है। लेकिन अगर मैं उसका आदती हो जाऊंगी
तब मैं निवृत्त नहीं हुई, तब मैं प्रवृत्त में और प्रवृत्त हो गई। अगर मेरे अंदर कोई इच्छा उठ रही है, प्रबल इच्छा, तो मैंने एक बार उसको पूरा करके मैं उससे निवृत्त हो गई, तब मैं हल्का होकर के अपना जीवन चल सकूंगी। लेकिन अगर मैं इच्छा को पूरा करने की आदती हो गई, तब मैंने अपने जीवन में उलझने बढ़ा ली, तब मेरी चेस ही वो हो जाएगी, तब मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ूंगी। ठीक है, एवोल्यूशन नेचुरल वे में भी होता है, but it will just take about 1,000,000 lifetimes. Now when we have got the guru, we have the inclination, तब हम प्रवृत्त किस लिए हुए? निवृत्त होने के लिए, और फिर इस जीवन का लाभ उठा करके हम आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। अब नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली हम संसार में एकदम फंसे हुए रहते हैं, और फिर हमको फील होने लगता है, अरे मुझे बड़ी घुटन हो गई, अब तो मैंने इतने अपने लिए सब, इतने तो लोन्स है मेरे ऊपर, है ना, इतने लोन्स हो जाते हैं ना हमारे ऊपर, भाई इसका भी चुकता करना है, इंस्टॉलमेंट्स में हमको चुकता करना है ना, तो चुकता करते करते हमारे ऊपर इतने लोन्स हो जाते हैं, फिर कहते हैं हम तो, हमारा ये जीवन तो व्यर्थ चला गया, और अब हम कब हमें आत्मज्ञान होगा। लेकिन उसमें भी एक रास्ता है, वह सब करते हुए अगर हम कानों पर थोड़ा ज्ञान पढ़ने दें और अपने आप को सवेरे शाम 5 मिनट 10 मिनट निधिध्यासन के लिए देते चले, तब हमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, और वो निराकार सत्ता देखेगी कि ये अब निकलने का प्रयास कर रहा है, तो किस तरह के बालक बनते चलेंगे और हम सही रास्ते पर अग्रसर होते चलेंगे। अब मैं आपको देखिए 63rd श्लोक में एक सेकंड के लिए ले जाती हूँ। 63rd श्लोक में वो क्या कहता है? जगत विलक्षणम, जगत विलक्षणम ब्रह्म, ये जगत से अलग है ब्रह्म। और नेक्स्ट लाइन में अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए शंकराचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक तरफ कहते हैं जगत विलक्षण है, मतलब इट इज ऑफ अनदर डायमेंशन, फिर कहते हैं कि जगत की हर एक चीज केवल ब्रह्म है। तो इसका यहाँ पर वो एक टेक्निक पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्या टेक्निक पॉइंट आउट कर रहे हैं? इसीलिए मैं ये दोनों वर्सेस पिछली बार भी कह रही थी कि मैं साथ में लेना चाहती हूँ, तो उसका कारण ये है। तो उसमें क्या टेक्निक है? ये राग द्वेष को कम करने का टेक्निक है। जिस चीज से मेरा ज्यादा राग है, आसक्ति है, मनीषा जी, जिस चीज से ज्यादा आसक्ति है, और मुझे इन माय हार्ट ऑफ हार्ट्स आई नो कि आई एम हेडिंग रॉन्गली, उस चीज को मुझे मिथ्या करके देखना है, मृग मरीचिका करके देखना है, ये मिथ्या है। वहां पर वो 63rd श्लोक की जो सेकेंड लाइन का लास्ट शब्द है मृग मरीचिका। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, हाँ, और मैं आपसे ये कहती हूँ कि इस एक्सरसाइज को, इस टेक्निक को 1 हफ्ते हम लोग फॉलो करेंगे, और फिर हम लोग शेयर करेंगे कि भाई इस एक्सरसाइज को करने से क्या क्या हुआ। और अब आज इसी सेकंड में मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों में से किसी ने अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि ये 21 बार करके देखा क्या, और इसका क्या नतीजा हुआ? Can I take a little time from this workshop to find out if any of you have used it and whether it has you have found it beneficial? I have not used it. You have not used it. So now this Can you exercise. tell us the line? I've not heard of this also. Pehle. Aham Brahma. अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, हम लोगों ने पिछली बार 21 बार हाँ, किया था ना correct, प्रभु? correct. हाँ, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप लोग इसको करेंगे
तो आप फिर उसके बाद शेयर करें। अभी इस बार का मैं कह रही हूँ कि आप ये वाली एक्सरसाइज शेयर करिए, हाँ ये वाली एक्सरसाइज करिए और फिर अपना अनुभव शेयर करिए। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे करेला है, तो करेला हमको पसंद नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, करेले के अंदर उसका ब्रह्मपना याद करें, वो कितना बेनिफिशियल है, जिससे कि हमारा उससे लगाव हो जाए और उससे हमारी डिसलाइक खत्म हो जाए, है कि नहीं। जिस चीज से भी हमारी लाइकिंग है और वो हम जानते हैं कि हमारे लिए पसंद नहीं है, वो हमारे लिए हानिकारक है, उसको हम मृग मरीचिका कर करके देखेंगे। और जिस चीज को हमको मालूम है कि ये मेरे फायदे की है, उसमें हम ब्रह्म भाव लाएंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में भी यही बात कही है उन्होंने एक बात कही है तैत्तिरीय उपनिषद में कि नो फूड टू बी गॉड। लेकिन अगर मुझे खाना बहुत पसंद है, तब मैं क्या कहूंगी अपने आप को, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। तब मैं नहीं कहूंगी कि फूड इज ब्रह्म, क्योंकि फिर मैं ज्यादा खा लूंगी। अगर मुझे एक्सरसाइज नहीं पसंद है, प्राणायाम करने में मुझे बहुत बोर्डम लगती है, तब मैं कहूंगी कि एक्सरसाइज मुझे ब्रह्म के नजदीक ले जाती है, मुझे इंटरनलाइज करती है, मुझे अपने आप में लेकर के जाती है, और वहां पर जाते जाते मुझे अपने ही भीतर ब्रह्म का अनुभव दिलाती है। प्राणायाम मेरी सारी इंद्रियों को बाहर जाने से रोककर अपने अंदर लेकर के आता है। कछुए की तरह से मेरी इंद्रियां सिमट जाती हैं, वो ब्रह्म है। जब मैं ऐसे खूबसूरत शब्द एक्सरसाइज को दूंगी, तो अगले दिन सवेरे उठ करके मैं एक्सरसाइज करूंगी। तो जो कुछ हमको पसंद नहीं है और हमारे लिए लाभप्रद है, उसमें मैं ब्रह्म का भाव डालूं, और जो चीज मुझे अच्छी लगती है लेकिन मेरे लिए नुकसान की है, उसको मैं मृग मरीचिका करके देखूं। रसगुल्ला है तो मैं कहूँ ये मृग मरीचिका है, कितनी देर इसका टेस्ट रहता है, बाद में कितनी देर की तकलीफ मेरे लिए मोल करता है, कितनी मेरी डायबिटीज बढ़ाता है, कितना मेरे अंदर गैसेस बढ़ाता है। तब मेरा मन नहीं होगा उस रसगुल्ले की तरफ, मैं उसका छोटा सा टुकड़ा लेकर के ही बस इतना सा खा लिया या उतना खा लिया, आधा कुछ सेकंड के लिए मेरा उसका टेस्ट रहा, या 1 मिनट के लिए उसका टेस्ट रह लिया। इससे ज्यादा तो वर्ल्डली प्लेजर्स का टेस्ट रहता ही नहीं है। सारे वर्ल्डली प्लेजर्स मृग मरीचिका है। आप समझे? ये एकदम क्लैरिटी से जब हमको दिखाई देगा, रसगुल्ले से मन हट जाएगा, एक्सरसाइज की तरफ झुक जाएगा, करेला को पसंद करने लगेगा, लाइक्स एंड डिसलाइक्स का जो इम्बैलेंस है वो समाप्त होकर के समत्व भाव हमारे जीवन में ले आएगा। तो ये है टेक्निक। और आप लोग ये वाला और इसके पहले जो बताया था अयम आत्मा ब्रह्म, नहीं अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, इसको प्रैक्टिस करके देखें और शेयर करें, तब हमको मालूम पड़ेगा कि इन टेक्निक्स का में कोई तथ्य है कि नहीं है। ठीक है, अब हम लोग 65th वर्स ले लेते हैं। कमला भाभी एक सेकेंड, आपने जो ये बात कही ना कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हाँ, दिस इज द रूट कॉज। यस, बेसिकली वी हैव टू राइज अबव लाइक्स एंड डिसलाइक्स। एब्सोल्युटली। खाली नाम दो है लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लेकिन ये अपने साथ पूरा जत्था का जत्था लेकर के आते हैं। इसलिए इसी को, इसके ऊपर ही हम लोग अपना ध्यान लगाएं। आई कैन नॉट सी यू ऑन माय गैलरी समहाउ, कविता जी, हाँ देयर यू आर। इट्स लाइक यू नो राइडिंग, जैसे कहते हैं ना कि जैसे यू राइड अ वेव, जैसे जो सर्फ करते हैं
Huh. they are there on the wave, but they are Yes. on top of the wave. So like that, Exactly. we ride the wave and we slide along. Yes. We enjoy the ride. The Yes. pleasure is in the ride, Yes. not in the, that is the, that image comes, and it very beautiful image it comes. Ki you're riding the wave, but you're Yes. not in the wave. Yes. The thing is कि जैसे कोई मेरी जलेबी आ गई या chocolate brownie आ गई या with ice cream and hot chocolate sauce on top. So beware of just one sentence cropping up in your mind. I want to taste this again. ये वाले एक सेंटेंस को बाद दीजिए. जो भी pleasure सामने है उस पर ride the wave and then become equanimous. आज इसका मजा दिला रहा है वो ही परमात्मा. कल को ईद का आज ईद का मजा है तो कल हम रोजे का मजा लेंगे. जो कुछ भी है सामने उसको हम, क्योंकि ये रस स्वरूप है, ये एंजॉय कर सकता है और करना ही चाहिए. ईशावास्य में भी कहता है कि भोगो लेकिन आसक्ति रहित होकर के. ठीक है. 65th वर्स. सर्वगम सच्चिदात्मानम Sarvadam Sachitatmanam ज्ञान चक्षुर निरीक्षते अज्ञान चक्षुर नेक्षेते नेक्षेत नेक्षेत भासवंतम भानुमंदवत भानुमंदवत. Just repeat. भासवंतम भानुमंदवत. Bhanumantavat. हाँ, Bhanumantamat. मंदवत. दो आत्मा एक. हाँ. Shall I proceed? Yes. दो आत्मा is of the nature of pure consciousness and ever present everywhere, yet it can only be perceived by the eye of wisdom, just as the blind do not see the resplendent sun. So to one whose vision is obscured by ignorance does not see the self. Obscured by ignorance का क्या मतलब? हम too busy हैं, worldly matters से too busy हैं, so we miss the subtle presence of the self, because that everything else we can only perceive through the senses. The self also we want to perceive through the senses, and therefore we miss out on it. याद है ना वो 10th man की स्टोरी? तो 9 आदमी बाहर मिले तो 10वां आदमी भी वो बाहर ही ढूंढ रहा है, इसलिए उसको मिस हो जाता है. तो अब ये सवाल उठता है कि यहाँ पर जो एनालॉजी दी है, the sun which is shining in all its glory, in its brilliance, in its brightness, and its effulgence, and yet the blind cannot see. Does it mean that there are some who are born with a different kind of vision? No. If we are born with this human body, automatically we have the capacity to observe the self, to become the seer, to be in our witness. That is our first, as a human being, the first potential we have is of witness consciousness. So there is nothing like a special perception which is given to a fortunate few. With the human body, we are all first and foremost blessed with that capability of being the witness consciousness. Now, who sees?
the one who has opened the eye of wisdom. What is this eye? You know, there are 5 aspects of intellect within us. Who's going to name for me the 5 aspects of intellect? इंटेलेक्ट के बारे में सोचिए, और हमारे शास्त्रों में इस माइंड को, मन को कौन से मोटे मोटे 5 भागों में विभाजित किया गया है, वो बताइए. Is it the 5 senses, Amla Ruya ji? हाँ जी प्रभु, वो तो 5 सेंसेस हैं. फिर मन है जो कि फीलिंग्स और इमोशन का बना हुआ है. Yes. इंटेलेक्ट भी आएगा. उसके अंदर इंटेलेक्ट भी आएगा, विच इज द डिस्क्रिमिनेटिव कैपेसिटी. So the 5 sense organs are counted as one. The objects or the instruments of perception, that is one faculty of the mind. The other faculty of the mind is feelings and emotions. The understanding which suddenly dawns up. मैं अहम, मेरा जो अहंकार है, जो सब चीज का मास्टर बनता है, मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ. That is not necessarily right, Amla ji. That's ego. Ego हमें control में रखना चाहिए. तो वो, we are not discussing right and wrong, and there is nothing wrong with the ego. We only have to cleanse the ego. Without ego, we will not be able to get the Brahma Gyan also, which is now being given to us. So this ahankar can be the ahankar of a person, me as a person, or this knowingness can be that of the witness consciousness, which can see everything without adding the person to it, minus the various identities which we have taken on as a mother, as a woman, as a person, as a good person, as a poor person, as a bad person. All these are the identities we have given to the person. But it is beyond the person that there is this Shuddha ego, Shuddha Ahankar, the capital I, which which knows that it is the substratum of the entire creation. That is called the Shuddha Ahankar. So what are the faculties of the mind? We were talking about 5 faculties. There are the instruments of perception. There is the feelings and the emotions. Intellect. The intellect or discriminative power. Ego. The Ego. ahankar. And then this capacity to know, this knowingness which is there within me. That is also a faculty of the mind. There is the memory aspect of the mind. The memory is also part of the same mind, which in the English language, there may not be that many words to explain all the various. In fact, in our Shastras, the mind is divided into 64 parts, which for the sake of convenience, we are just dividing into 5 parts. So there is the Medha, the intuitive power, which is the Pragya. There is the higher willpower, which is the Dhriti. And there is the Dhi, which is the heart of our spiritual understanding. So all these are various parts of the mind. So now we concern ourselves with that intelligence within us, which can see or perceive when all the other faculties are not being used at all. It can still see. That is the overall underlying intelligence of this entire creation.
Now, I want to come to the root of this ignorance. See, our ignorance is such that it does not even allow us to feel the lack of the knowledge. अगर हमको ये ज्ञान नहीं होता, अगर हमारी रुचि आध्यात्म में नहीं होती, तो हम as a person we would have continued to live and to become older and finally one fine day die and then come back into the cycle of rebirth. This is what we have done 84 लाख बार. यही चलता रहा है क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है, हमको एक फीलिंग ऑफ लैक भी वो फील नहीं होने देता है, इसलिए हम इसी साइकिल में घूमते रहते हैं. Thus we are being fooled by our own selves. जैसे कि एक सुअर अपनी सुअरी के साथ बोलता है मैं तो खुश हूं ना, यहाँ पर मैं हूँ, मेरी सुअरी है, मेरे बच्चे हैं. उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि वो कितनी गंदगी में वो रह रहा है. उसका जीवन जो कि बहुत सुखमय हो सकता था, कितना दुख से भरा हुआ है. तो ये हुआ हमारे 65th वर्स का एक्सप्लेनेशन. और अब हम लेकिन जब उसको उससे बेटर चीज का टेस्ट ही नहीं मिला है कभी. एग्जैक्टली. तो आज अपने को जब तक एक अच्छी चीज का स्वाद या उसका स्पर्श नहीं मिलेगा, तब तक अपन इस चीज को छोड़ेंगे भी कैसे. एग्जैक्टली. अपने समझे जिसमें अपने लिप्त हैं या उलझे हुए हैं, या जो जिसको अपन कहते हैं जो अपने को चारों तरफ से घेर रखा है, एग्जैक्टली. उसके ऊपर उठने के लिए तो एक चीज का स्वाद भी तो आना चाहिए. नहीं, बिल्कुल. वो स्वाद आए बगैर हमारा मन ही नहीं होता. तो हम कैसे छोड़ें? आफ्टर ऑल ये तो हमको सच दिखता है, इसको हम किसके सहारे इसको छोड़ने को तैयार हो, है कि नहीं? कहते हैं कि जैसे कि आप एक वेदांत के क्लास में सुने थे कि जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो पहले आप नेक्स्ट स्टेप पे पांव रखते हैं, फिर पीछे का पांव उठता है, फिर पीछे का छूटता है. इसी तरह से अपने को भी एक हायर माने असेंडिंग कोई चीज पे उसका स्पर्श करके तभी अपन इसको करेंगे. बिल्कुल. हाँ, जैसे आप कह रहे हैं जो चांटिंग या वो करेंगे, तो वो अपने को एक उधर उस रास्ते मन को ठहराने के लिए. हाँ. तो 66th वर्स. श्रवणादि भीरुदीप्त ज्ञानाग्नि परितापिता जीवः सर्व मलान मुक्तः स्वर्णवत् द्योतते स्वयं. The Jeev, on being heated in the fire of knowledge, kindled by listening to the scriptures and so on, becomes free of all impurities and shines by itself like gold. अपने आप जैसे हमारे अंदर की गंदगी मिटेगी, हम अपनी ही सफलताओं से और मोटिवेटेड होकर और इस तरफ बढ़ेंगे, और उससे हमारा सारा मैल जो खत्म होएगा, तो अपने आप इसके अंदर से इसकी प्योरिटी चमकने लगेगी. जैसे कि सोना जब तपाया जाता है तो उसकी इम्प्योरिटीज खुद ब खुद जल जाती हैं और उसके अंदर की चमक ऐसे ग्लिटरिंग होकर के बाहर निकलती. तो कहते हैं कि श्रवण से जो ज्योति प्रज्वलित होती है, उससे भी थोड़ी अविद्या जल जाती है. जस्ट लाइक द प्योरिफिकेशन impurity of gold which starts falling away when it is put in the fire. अभी देखिए, जैसे हम लोग अपनी कंपनीज में एक ईयरली ऑडिट कराते हैं ना, फाइनेंशियल ऑडिट कराते हैं, which is done once a year.
So also we must do our spiritual audit every day. How much have I come out of my comfort zone? भाई ये तो मुझे चाहिए, इसके बिना तो मैं नहीं रह सकती. How much have I come out of my asakti or attachments? How much of my negativity I have been able to turn into positivity? How much devotion has increased in me? Do I feel devoted towards every member of the house? Do I feel that devotion towards anybody on whom my eyes may fall? How much of mumukshatva has increased in me? कितना मेरा वैराग्य और बढ़ा है? ये जगत तो अपने आप हर टर्न पर वैराग्य ही देता है. This jeev can be freed from all impurities and he will shine as little of the impurities go away. The gold will start shining in all those places. जहां जहां से वो हटा है मैल, वहां से अंदर से सोना चमकने लगेगा. मनी तपना पड़ता है बहुत. हाँ, तप बहुत करना पड़ता है, इतना इजी नहीं है. अपने आप हो जाता है ना, गुरुदेव करवाते हैं. हाँ, गुरु से लिंक हो तो रास्ता हो बता जाता. रखा है ना, वो ठीक है, गुरु अपने आप करता रहता है सफाई. क्योंकि हमको ज्यादा टेंस भी नहीं होना है, हमको सब चीज रिलैक्सेशन में करनी है. मैं आपको कुछ लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ. Slowly our avidya goes away and our true nature starts getting revealed to us. One should not misunderstand that suddenly there will be a glow on the face. भाई ये वाली तो ऐसी तो मेरी फोटो थी 1 साल पहले, अब मैं देखूं ये जो आज कल जो फोटो निकली है इसमें मेरे फेस में ग्लो आ गया क्या? ऐसे कोई चेंजेस नहीं आएंगे. ठीक है? The peace that you feel within, the realization that you are unattached, the perfume of the joy, they will start showing slowly, gently. इसके लिए मैं आपको कुछ लाइनें पढ़ करके सुनाती हूँ. शांत शिथिल शीतल मन में वैराग्यवान अनुराग जन्मे, मधुरिम मधुबैन बसे मुख में मोदमयी मुदिता तन में. यह स्थिति छूटे साधक तड़पे, इसलिए सतत अभ्यास करे. चंचल चित की नहीं एक चले, 100 बार गिरे गिरी गिर के चढ़े. गुरु की और निज की शक्ति लिए दीर्घ काल प्रयत्न किए, श्रद्धा विश्वास को साथ लिए उत्साहित सफल प्रयास हुए. यो साधक की दृढ़ भूमि बने, निर्मल मन तृष्णा रहित रहे, दुनिया के रस फीके से पड़े, प्रेम पूर्ण प्रण प्राण रहे. ये स्थिति हमारी इस ग्रंथ के अब हम समाप्ति के निकट आ रहे हैं. इसलिए अगर हम शांत और शिथिल हो जाएंगे इन अ रिलैक्स्ड वे, we just try to reach that point which is now going to be revealed to you. मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करूंगी और बातचीत करते करते मैं आपको धीरे से मेडिटेशन में ले जाऊंगी. अभी देखिए, एक हमारे अंदर अभी एक नया ऑब्सेशन आ जाता है जब हम आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं ना. लेट गो करना है, लेट गो करना है, सरेंडर करना है, सरेंडर करना है, सरेंडर करना है. अरे सरेंडर तो करना है, but who is going to surrender the surrenderer? जब तक वो सरेंडरर बचा हुआ है तब तक सरेंडर कहाँ हुआ है? तो फिर कहेंगे अरे मुझे तो ये मालूम नहीं था कि the deal was to surrender the surrenderer. You are the one
you actually want to get rid of, but you are still standing over there. So you have not got far. So you have to be ready to surrender the surrenderer. और वो अपने आप होता है जब आप शांत और शिथिल, relaxed. Just be joyful, peaceful, relaxed, and go again. Now we are just going to enter our this thing. I'll just be taking you through it in a very normal, natural way. So you don't even feel that you are going anywhere, because really speaking, you're not going anywhere. Now, bring your mind inside your heart, and the world will not trouble you anymore. When you come into the world, you are plagued by fear. Oh, what will happen? If I don't take care of myself, what will happen? But I'm telling you, once your heart and your Agya Chakra have merged during meditation, an intuitive understanding awakens, where I realize that the very intelligence and myself are one, and thereafter all fear vanishes. In that state of total relaxation, I can come directly in contact with the self. And that experience, which has not come through any of the senses, remains with me for a longer time. You have felt your own self as not being the person, but the all-pervading, tranquil, content space, which is the substratum of the whole creation. When you grow out of the limitation of being a person, then you can clearly see how the person and its mind keep on getting in the way of the workings of at the functional plane. And you keep on postponing. Someday I will do what I have always been. Someday I will be what I have always been. मैं already वो हूँ, लेकिन मैं उसको postpone कर रहा हूँ, because I do not want to surrender the surrenderer. Because I have not made this deal that I want to give away this person. So I keep on postponing. I keep on saying, kabhi future में हो जाएगा. But that is totally illogical, because we are already that. Let us just step into our reality right now. Start by making yourself, now here, please follow instructions very closely. Start by making yourself completely burdenless. Drop all those things which are unnecessary. Let us try to be empty for the rest of this session. Empty. I'm going to take away everything now. Poof. Relax. लेकिन आपके मन में आएगा, लेकिन मेरे को एक सवाल था जो आपसे पूछना. अच्छा, सवाल था ना, उसको बात के लिए रहने दीजिए. Leave everything. Become totally alone. It is not difficult. To be totally empty is a natural gift which every human being has got. Drop all ideas of who you are. Let go. Let go of the effort of being empty. Don't hold on to any shape, any idea. How simple it is if your mind does not say, but को छोड़ दीजिए. Give yourself the permission simply to be empty. It is very safe right now to be empty. Just become empty.
as though everything that you have ever believed in has been dropped just now. Right now, be very empty. No ideas about the future, or how will this benefit, how this being empty will benefit me. Don't have any intention. You are just not interested in how to be benefited by it. For now, be fully empty, just hollow and empty. Don't pick up any idea. ये idea आ रहा है, इसको pick up कर लिया, उसको बुनते गए हम लोग. नहीं. When you are in this space of hollow and empty, I will ask you a few questions about that. Now, you have come upon something which cannot be taken out, cannot be taken away. Have you become aware of this? No hypnosis is happening. No creation, no thinking, just what is. A willingness to simply not hold on to anything. Don't combine this sense of self with anything. Any roles of father, mother, sister, brother, any past history. There is no scope for any story or history of being a doctor or housewife, wise or foolish. All such thoughts are gone. But what is there is not blank. You are aware of that which is. This, that is here. Can anything remove it? Look, just look, even with eyes closed. You can look where I am pointing. Can you go to any place where you can reach the edge of this in what you are? Remain here and answer. Are there any boundaries of what is here? Did you create this isness, or what is? Can you throw away this isness? Does it have a beginning or end? Can you move away from it? To respond to the questions I'm asking you just now, do you have to learn anything, or are the answers coming spontaneously in your heart? Just keep on affirming or not affirming in your. Can this that I am referring to, can it be touched? No. Can it be manipulated? No. Or used by someone No. to someone's advantage? No. Can it be denied to anyone? Is it merely a feeling? Is it a mood? Is it meditating or meditation? Remain in it. Empty. Beyond even the concept of being empty.
this is available to you at all times because it is your true self. Now, when you open your eyes, you will know that whether eyes are closed or they are open, you are always in that space. You are the substract. And this is what I was talking about when I told you that this morning, I just felt that this is closing on to me. जैसे मैं पूरी की पूरी इससे आच्छादित हूँ. Nothing was there except for this feeling. Please, anybody would like to share the experience? Shashi ji, you have unmuted yourself. Would you like to tell me what you're feeling? I'm feeling so much peaceful and calm, and I'm feeling complete. You're feeling complete. Complete. There is a sense of completeness. Yes, yes. There is a sense of tranquility and peace. And in that, if you stay long enough, there will be a feeling of joy or bursts of joy just coming from somewhere. Yes. Yes, Kavita ji, we have somehow managed to do it just few minutes before 5 o'clock. अब वो 5 o'clock का कर्फ्यू नहीं है क्योंकि अब यहाँ आ गए ना. वो थोड़ा सा Very well said. लेकिन हम लोग ज्यादा डिसिप्लिन हो गए हैं थैंक्स टू इट, सो व्हिच इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस. है कि ये जितना करेंगे उतना, जैसे आप कह रहे हैं ना कि नित्य ध्यासन, ये चीजें नित्य ध्यासन की दिन में 2 बार 1 बार जब मन हो करें थोड़ा थोड़ा, तो वो जैसे आप कह रहे हैं ना, एक अंदर की क्लेंजिंग और एक वो पीस और शांति. आई डोंट नो, इट्स कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है अभी. Yes, so that is why the Rishi Munis have said that it is Shabdatit. It is beyond the intrigues, beyond the intellect, और शब्दों वर्णित नहीं हो सकता कि इतना कुछ है इसके अंदर. ब्लैंकनेस भी नहीं है, ब्लैंक होते हुए भी ब्लैंक नहीं है, बहुत ही कुछ है इसके अंदर, है ना. अच्छा, इस स्थिति में हम ब्रह्मास्मि बोले तो बहुत प्रोफाउंड होता है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. यस जी. मैंने तो उस शब्द का सहारा लिया जो तुमने शुरू में कहा, आच्छादित. हाँ, अपने आप को वो महसूस करने का करा. अब मैं आच्छादित हो रही हूँ पूरे में. बस आवाज भी आ रही है जो आप बोल रहे हैं. वो बोल रही है कि उसको फीलिंग हो रही है कि वो आच्छादित, ये जो चीज है, दिस इजनेस, इसने इसको पूरा आच्छादित कर दिया. That's what she's saying. उसी शब्द का सहारा लेके मैं बैठी थी. बहुत सुंदर जी, very nice. We will meet next time. Any points Rekha ji has written which she would like to share with us? Like I was saying कि पूरी इजनेस थी, उसमें आपकी आवाज भी आ रही थी पर कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं था. Everything was isness. You were heard very clearly also, but there was oneness. It was a new experience. Like you could be heard and there was no disturbance. It was one only. So there was no hearer. The words were being heard with in the absence of the hearer. Yes. This was a really new experience for me. Very beautiful. Very, very lovely. तो अभी अपना एक last session इसका बचता है. So I will take your leave. Thank you. Thank you. Thank you, Amla ji. Thank you very much. Thank you. Thank you, Amla ji. Thank you, Amla ji. Thanks. Thank you, Amla ji. Thank you.